Guys, welcome to today's stream. आज थोड़ा Genshin में टाइम पास करते हैं। टाइम पास मतलब थोड़ा फार्मिंग करते हैं भाई। सही में भाई कोलंबिना आने वाली है अगले हफ्ता। फिलहाल तो कुछ है नहीं। अभी नाइन I don't वो know. बॉर्डर क्यों आ रहा है मेरे को बताओ। एक सेकंड। That's my bad. एक Borderline सेकंड head. guys. बॉर्डर शायद ちょっ अब हट となま जाएगा। ってきたな。どこかに調停人の出番はないか？ All should be good. Probably. अब बॉर्डर लाइन नहीं आना चाहिए। अब बराबर आना चाहिए तो। चेक कर लो। अभी 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 手加減なし He's よ very good. 止める勇気はあるか？ 風が立つぞ。撃て。ロックオン。 Formation is passed on to the recovery window. Ten 60 पे है 14 दो बात सही तो है. स्मूथ है ओ गायब नहीं हो रहा है आएगा ये वाला じゃあ行くよ ठीक है ना दिख तो रहा है एकदम स्ट्रेच रेजोल्यूशन. स्क्रैच है क्या अरे ठीक ही है बट स्ट्रेच लग रहा है इधर से. इसको भी 1080p कर लो ना. उसके नीचे वाला नहीं ये नहीं विंडोज से फुल स्क्रीन कर रहे हैं. योशी तो फुल स्क्रीन आ रहा है लो भाई ऊपर वाला ही करो. चलो इट इज व्हाट इट इज करके आगे चलो. ठीक है हाँ सही है. यस इट्स गुड. आपके लिए कैसा है वैसे? दिख रहा है बराबर है फिर क्या है हाँ बराबर दिख रहा है. तो फिर एकदम अभी पतला हो गया सही है इट्स गुड. इज इट नॉर्मल ना यस मैंने पता क्यों कैसे दिख रहा है बेटा कैसे दिखाओ. लोडिंग कहाँ पर है? What is this? ये हैफर. मैं भी ऐसे ही खेलता हूँ ऐसे. हाँ भाई ये देखना 神というのは天上の存在だが、たまには地上を歩き回るべきだな。 क्रॉप वर्जन विद शॉर्ट स्पीड. डुअल स्ट्रीम मत करो. वो शॉर्ट पे भी स्ट्रीम कराएगा. अच्छा तो डुअल स्ट्रीम का कोई फायदा नहीं है. इट्स गेम. seriously Did I start it? yes it did चल चल नहीं होता फुल स्क्रीन है ना स्ट्रीम की तो फुल ही दिख रहा है ना हाँ. Oh my god what have been the days क्या दिन आ गए. आगे क्या आगे दिन आगे
武力行使の許可を確認。さあ負けだ負けだ。諦めることだ。情報は伝えてある。 जो राटाटॉफ पर है हर एक दिन स्पॉन होता है क्या? मेरा अकाउंट में भी फार्म करते भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। I don't think so. ऐसा तो नहीं होता है ब्रो। आओ चलो सही से साथ में फार्म करने के। वेलकम टू द स्ट्रीम दो। So I got AC का ही नहीं है। इसको 辻に乗ろう Wi-Fi का 烈日よ。じゃあ行くよ賢いやつだ。 मारियो बेचारे को। अरे मटेरियल्स के लिए और किसके लिए? また時間の手加減なしよ加速すると。 यार ठंडी ने मार के रखी है भाई। घंटी मार के रखे हो। आना भाई। बंगाल में है ये। ロックオン。撃て。 कोठा में भी नहीं है। चल 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 चल। 辻に乗ろう行使の許可をこの天下で裁く。情報は伝えてある。 さあ働く飛ぶか。今だ。 इसका जंगीस का हेल्प करने वाला है। जंगीस These birds वो वाला yes we can these two heroes। 武 कल 力 क्या 行使の許可を तू मेरे को बात बता। कल वाले जो स्ट्रीम पे जब वो फ्लो उधर पीछे था तो क्या किया मेरे को? What did it do? I don't know। I was on call और मेरा माउस पैड एंड हो गया था। तो आपके डिफेंस पे क्या कहना चाहोगे? माउस पैड की क्या की मूव। वो मेरे सामने था ठीक है। तू उसके पीछे वही था। मेरे सामने वाली खिड़की में वो वाला। नहीं वो बैक साइड पे था ना लोटस पे। हाँ हाँ वही तो ड्रॉप से गिरा फिर बाद में कहाँ गया? मैं गायब हो गया। अभी मिनट बैठ गायब हो गया। छू मत छू। अंतर छोड़ तो स्टीजन थोड़ा रेट हो गया। ओ बढ़िया करा हुआ तो प्लीज वो नहीं ऑफ कुछ तो था ये बारे में बढ़िया है you know क्या ये जो बैकग्राउंड ओएसटी है ना इसका Genshin का बढ़िया है वीडा बिगू बाय ऑटो में
के आने में मजा कुछ रहेगा। ऑटो में कोक ठंडी ठंडी लगे एकदम। हो गया क्या? सर ऑफिसर देख रहे हो मतलब है ऑटो में कोक दिख रहा है। Aajao. The cheese filled though. Of course ठंडा होगा, of course भाई मैं भी क्या सॉल्व करती हूँ। आज मंडे है, आज ट्रांजिएंट सेव करना है, ठीक है मेरे को तो करना है। वैसे तुम लोग करने की जरूरत नहीं है सिंस हो चुका है। नहीं ये जो है वो 3 के लिए हुआ ना, वो नया है बस। जी भाई बॉस करते पहले कोलंबिना का तो भाई लैपटॉप में जेंशिन डाउनलोड किया तो पूरा हैंग हो गया, ये क्या होता है? SSD है HDD? SSD या HDD पे डाउनलोड किए हो? नेफर लेना पड़ेगा, नेफर ये बर्फ क्यों लेके आ रहा है? Ascendant क्लीन नहीं है क्या मेरे पास? नया हो के भी अरे नया ठीक है, SSD में डाउनलोड किया या HDD में किया? जो आदि हुई ना वही वाला लैपटॉप है। I don't know वो ज़्यादा नॉलेज नहीं है। भाई वो मावी का लेना तो मैं नेफर भी चला रहा हूँ यार, बर्निंग पे मेरी लग रही है। वो तो सिटला ले लग के शीट में रखा है। गलत बात नहीं हो पाएगा ये रैंडमेड और ये नहीं लेगा उस बात में। मैं थोड़ा फ्रेश हो गया। 5-10 मिनट, हाँ हाँ आराम से जाओ। 112 SSD AMD Ryzen graphics। 手加減なしよ。運命の変わり目名誉形成燃えよこの天下で裁く任せて。サンキュー物語は始まったばかりだ बार बाहर नहीं होगा। अरे मैं 1 HP कैसे हो गया? यूरिन गया मेरा भाई, मैं चैट पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हो जाता है भाई। 異形を見届けよ अरे फायदा नहीं है उसको मार के, अल्बेडो को मारने बोलो। नहीं अल्बेडो 任せて。 By the way, I will send image of what Malato will
फसक सूर्य लेके आ जाए क्या बे? मेरे को लग रहा है वही बेस्ट रहेगा। कोई बात नहीं, हाँ हाँ आराम से भाई, अभी नहीं बात। पैरो मारो, पैरो मारो। पैरो लग ही नहीं रहा था वो। बढ़िया गाना लगा, बढ़िया गाना लगा। वो जेंशन का ओएसटी से मेरे को कुछ नहीं होना ना। मास्टर ऑफ सिटी क्या है? राइट, हम फिर आई नो स्कर्ट वर्क क्या देगा? स्कर्ट वर्क क्या होता है? जो फ्रीना चलाता है ऐसा लगता है बहुत सेल्फिश है। अच्छा 8 GB रैम है उसका। हाँ तो लग गया भैया। जनरेशन में 8 GB रैम है, मतलब रैम और उनको ये वीराट सुना दे रहा पता है। वाला इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है जीचा। ओए चीचा तो 8 GB भाई, मिनिमम तो 16 है। हाँ 16 अभी बेसलाइन हो चुका है। मिनिमम भी 16 हो गया ना, वही तो है। हाँ और ये अथर बोल रहा हूँ, असर भी तो रैम लिया है, उससे कब चल गया? उससे 8 GB का स्टिक लिया था। अभी नहीं, पहले ये रैम का प्राइस इंक्रीज होने से पहले। ठीक है। तो उससे तो लगा हुआ है ना। गाइस लाइक मारो, 4 लोग देख रहे हैं, 4 लाइक तो है। लैंडलाइन के लिए हमने फॉर्म कर सर। ठीक है स्टार्ट हो। भाई देखो गाइस, कर पे समिट शेवर चला गया है। कौन खेल रहा है? अरे हम ही खेल रहे हैं। The thing is, SSR ऑफिशियल आपका जो है 8 GB रैम है,
उसके कारण तो दिक्कत उसके उसके कारण थोड़ा बहुत दिक्कत होगा आपको, और आपको सेटिंग सब लो करके खेलना पड़ेगा। लोवेस्ट ऑफ लोग को करना पड़ेगा, लोवेस्ट को नीचे लो ऑप्शन उसके अगर तब सही जाएगा। और असर वाली हालत। ट्राई करता थोड़ा। GTA 5 लेगेसी चल सकती है उसमें, एंड हैज लाइक अरे मेरे नाक बदल है जो। बहुत हो गया कि इतना ठंड हो गया है, सर्दी सर्दी। हाँ ना, डिपेंड है डिपेंड। यो रिटर्न भाई यो। लेकिन खेल कौन रहा है नाम तो मालूम नहीं, सिर्फ आपका और अतर का मालूम डीसी है। का लिंक कहाँ है? डीसी का लिंक बनाना पड़ेगा, अभी लिंक तो अलाउड नहीं है ना हमारे। 500 सब्सक्राइब हो गया ना, देख लो थोड़ा कुछ नहीं हुआ। क्या कौन सा लिंक चाहिए, क्या लिंक चाहिए भैया? डिस्कॉर्ड का लिंक चाहिए शेखर भाई को। शेखर भाई को डिस्कॉर्ड यो रिटर्न भाई यो। लाइक कर यार, 5 को बिगड़े 3 लाइक हो। चल 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 नहीं होता। इस फोन में ऐसे तो नहीं होता है। गाने चला रहा हूँ बैकग्राउंड, गाने चला रहा हूँ, गेम चल रहा है, गाने क्या करेंगे? गाने तो आराम से चलेगा तो जब लैपटॉप तो। और गेम चल बैकग्राउंड में स्पीकर क्या चल रहा है? सब चल रहा है भाई। बैकग्राउंड में स्पीकर चला सकता हूँ। फिलहाल कोलंबिना के लिए सेव कर रहे हैं। ऑटो करेक्ट। थोड़ा स्टीजन पे थोड़ा टाइम कम होगा कि नहीं बोले, और एक फ्रेंड का हेल्प कर। क्या और नहीं होगा? ए क्या है स्कर का हो सकता है यार। नहीं और नहीं होगा। रखो गाइस देख रहे हो, हमें पीछा किया जा रहा है। ही इज सेटिंग मी बैक। सक्सेस से पीछे जाने बोल रहा है यार ये। यही करो आप। हो तो सकता है यार, मुझे को जितना लगता है हो तो सकता है। इट इज पॉसिबल। रिव्यू करो कि हाँ रे करो, बताओ आईडी भेजो, करते हैं क्या करना बताओ। अच्छे अगर है क्या आज सही है? नहीं भाई आज नहीं है, वो बंदा शादीशुदा आदमी है, वो घूमने गया है। वो घूर कर रहा है। 896 एक सेकंड, इसका हेल्प कर लो फिर मैं कर लो, रिव्यू चलेगा। अच्छा मजदूरी करेंगे। हाँ जी। अरे भाई कौन शादीशुदा है? अथर बोल के आदमी है। मजदूरी करके मिलेगा भाई। 3 बीवी 17 बच्चे। भाई टेंगन थोड़ी ना है वो। 3 बीवी 17 बच्चे तो कोई नहीं है। हाँ गायब हो गया ये। कौन जाने, देखो मैच करके देखो ना। सब कॉलम बिना के रहेगा, बस सब कॉलम बिना के रहेगा। और तू रहे कि स्किप कर रहा है? मैं स्किप कर रहा, सर अगर मैं स्किप करता ना अभी मेरे साथ पुल कर लेता। अभी मेरे साथ पुल कर लेता। ベランダの花がまた枯れてる。 ये फॉरगॉट 毎日水やりしてるのに。 अब तक करे 3 मंथ से कुछ नहीं मिल रहा है, मिलता वो भी प्रॉपर डिफरेंट भाई पार्ट से। इधर एक बंदा, इधर नहीं, इधर एक बंदा है भाई। सुअर बोलते हैं।
कितने साल तक डेवलप करा है? 2 साल। 2 साल डेवलप करा था। उसको लगा नहीं, रजिस्टर नहीं हुआ लास्ट हिट। भाई क्या मजाक कर रहे हो? इसको पायरो हुई नहीं पायरो होगा। मुझे इतना लग रहा है मेरे को भाभी का वगैरह लेकर आना पड़ेगा। बस ये आर्लिंग और ये ना जो चला, मेरे को हाइड्रो ज्यादा लग रहा है। तो शायद वही करना पड़ेगा अभी। और मेरे को बकवास मिल रहा ऑल द टाइम। अरे ये कौन सा इजी बॉस कर रहे हो? आप तो गिव अप कर रहे हैं। ये इस जगह नहीं रहे। भाई रेडन के टाइम जब आया था ना, जब इनाजुमा जब था, 1 साल एम्बलम फार्म किया था, क्योंकि दुनिया भर का कैरेक्टर्स के लिए एम्बलम चाहिए था। बस उसके बाद एक बार हो गया तो हो गया भाई। वो था ना, परफेक्शन के लिए नहीं गए, बस बैलेंस्ड खेल गए हम तो। एक सेकंड, आपने मेरा अकाउंट खोल के नहीं शायद तुमने क्या कर दिया? टोटल 12 एम्बलम पीस है मेरे पे टोटल। ये कौन सा इजी बॉस कर रहे? ये कोलंबिना का मटेरियल्स है, तो हम वो फार्म कर रहे हैं। 1.5 साल किया, बस कचरा मिले। मेरे पास नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर पासवर्ड है, बेज टेंशन मत लीजिए। भाई किम जोंग उन तो ऐसे ही दे दिया भाई, तेरा तो पड़ोसन निकला तो फिर। ऐसा सर भाई टीम पे खेलता है उसके साथ। हाँ भाई। सेटिंग है भाई, देख रहे हो? सेटिंग है। अगर जिन्होंने नहीं होता तो फिर वन शॉट ही कर देता था। ये आर्ली की नोट नहीं, वन शॉट नहीं हुआ ना, था तो फिर थोड़ा रेंज भी भाई। नहीं न्यू प्रूविंग गेम में मजा आता है। आलोक यो इसी कॉल आएगा भाई आलोक। वो जटा में रहेगा भाई, जटा में बिजी रहेगा। जटा नहीं खेला, जटा में उसको एक्शन मिल गया, एंजल मिल गई, खुश तो है। ये 2 साल प्लस हुआ है न्यू हु गेम में 2 साल प्लस हुआ है। रिटर्न बाय द वे अकाउंट रिव्यू करना भाई, इसका हुआ कि नहीं। रिटर्न बाय हो चैट पे हो गया। आप कब डाउनलोड करेगा जटा पे? अरे भैया एक दिन करेंगे। इनका डाउनलोडेड है, खेलते रहिए। नहीं है भाई, इसमें कहाँ है? और नया पीसी आया, नया पीसी आया। इसलिए इसमें कहाँ है? आपने एसएसडी चेंज किया था ना? सिर्फ एसएसडी में ही था ना? तो ऐसे भी तो है पूरा ये पे है ना फॉर्मेट। वेल डन। इरोनियस दिखाना जरूरी है। वही तो डाउनलोड करो, करते उसकी 10 मिलियन मोरा काफी। भाई फ्लेक्स देख रहे हो? 10 मिलियन। हाँ वही है, 10 मिलियन मोरा। हाँ जटा भाई क्या है भाई? हमने GTA 5 सुना है, इधर ये लोग GTA को जटा एक्स्ट्रा ए क्यों ऐड हुआ है वो नहीं पता। बस एक्स्ट्रा ए फॉर माइकल। एक्स्ट्रा ए किसके लिए हुआ है? अपना इसके लेस्टर के लिए। लेस्टर के नाम पे ये आता भी नहीं है। अरे वो उसने फुल नेम नहीं बताया रहेगा भाई कभी तेरे को। ए से स्टार्ट होता है। आर्नोल्ड लेस्टर उसका नाम। अभी डाउनलोड लगाओ सर। भी डाउनलोड लगा। स्ट्रीम पे कैसा लगाएगा भाई? स्ट्रीम लॉक पे लगा एक तो पहले से भाई पता नहीं क्या कर रहा है। सर्फ अप दे दो। अबे तो लाफिंग खा जा। अरे हो गया भाई। नहीं नहीं नहीं, हाँ सर्फ अप दे दो, लिख दो। हाँ
सब दे दो भाई, मूल आने का ये दे दो मतलब। अलग तो ऐसा है 84 पीटी में डीलक्स मिलता है और एक अर्ली लुक वो दो। तो यार कोलंबिना का गाना सुना है पर उसकी वीडियो प्रमोट नहीं है तो नहीं सुन पा रहा। नहीं आप सिल्वर मून तो उसका बंद है नया ना? गाना बजता है अरे तो नहीं, ये बंद है ना। जा सकते हो। जा सकते हैं। बहुत अच्छा है। हाँ टीपी टीपी कर सकते हो तो। वो नहीं है तो क्या हुआ, गाना सुन सकते हो चीचा। नया सेट आ रहा है ना। अभी नहीं, नया सेट आ रहा है वो बात अलग है, इसका टीम के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर इसका टीम में कोई सिल्कन वाला नहीं रहेगा तो उसको सिल्कर भी देना पड़ेगा। तो कोलंबिना को सिल्कन देगा ना ये। भेजा तेरे को। ट्रू ट्रू ट्रू। प्रीतम भाई है कि नहीं भाई? हम रिव्यू करने जा रहे हैं। हो गए हो गए। हेलो हेलो प्रीतम भाई, हाय हेलो बोल दो। 実にめよう契約を果たせ口封この天下で捕まえた नेफर नहीदा कोलंबिना कोटोमी, नेफर नहीदा, नेफर नाइट स्काई, नहीदा डी4, कोलंबिना, कोलंबिना को तो फिर ये करना पड़ेगा इसको सिल्कन। तीन रन इसमें हो जाएगा। आपका माविका का कौन सा सी है? भाई देखो, हम बात नहीं करते इसके बारे में, शायद ये अच्छा नहीं होता है। मेरे पास बस लामा है, कौन ना फोन करे। अरे 学校 करो のゲ भाई। ラ一般人にとってちょっと危 अब ない अब も तो のな कॉलम の मेरा यूनिवर्सल कैरेक्टर दकरा होंगे। कोलंबिना यूनिवर्सल है भाई, कोलंबिना निकालोगे तो फिर हर एक नॉर्मल रिएक्शन चला होगा। जरूरत नहीं है कि जो अभी वो 3 नॉर्मल है। होना चाहिए। हाँ कौन पे जी भाई, जी भाई का टीम है। आई मीन C01 है क्या है? अरे वही तो, वो सब नहीं पूछता यार। देखो को दिखाई देता है क्या, ये सब पूछा नहीं जाता ठीक है। ये सब पूछा नहीं जाता ठीक है सर, ये गलत बात होता है ठीक है, ये सब नहीं पूछता है। भाई जीवा इलोगा कोलंबिना गोरो कौन देखना है? この世捕まえた輪廻とは何年さはっとはっや ओ क्या ये कर क्या?さっと पीछे 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 हाँ हाँ। अंदर आएगा। 今日のタスクは全部イネファに任せたから安心して一緒にボコボコダックと遊びに行こう क्या हो गया भाई? पर्सनल मत लेना भाई, आप तो बोल दिए तो फिर पर्सनली लेना पड़ेगा, ऐसे कैसे होता है? भाई बात तो बात करो ये। पीछे
प्लाज्मा कॉन्स दिखाना भाई, नहीं 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 नहीं। そうね捕まえた一風のように अरे ये नॉन इन्फ्लुएंस ट्राई करो तो अच्छा है। ये नॉन इन्फ्लुएंस, हाँ हाँ हम जानते तो हैं। बट हमारे इसमें क्या केस है, इलान ज्यादा थोड़ा डैमेज दे देती है फ्लिंट से, है ना? हाँ हाँ एकदम एकदम। थोड़ा नहीं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा हो रहा था बस। वेपन मत दिखाइयो। हाँ, और जंगल भी बड़े बैठ गए। मेरे भाई तो मुझे इलान कौन ऐसा पूछ रहा कि भाई तुम जानते ही नहीं हो करके। इसका भी बात नहीं करते। अचिक बोलो। के रिकम भाई, क्या फ्रेंड्स विद आई नो 400k बट वीरान के साथ 700k हुआ तो आप भी ट्राई करो। मैंने वो रिकम भाई का आईडी नंबर क्या था अभी? 8.6 और एक था फ्लिंट्स। प्रीतम भाई हो चैट पे? हेलो हेलो फ्लिंट्स, वो देख रहे हो? स्टार एक्ट 10 और ओ लुनार हुआ है स्टिजन पे, फियरलेस हुआ नाइस। कॉमन मिलन जॉब का है यार। फ्लिंट्स 2.4 के C2 है। अब C2 है तो एक सेकंड, C2 इसको भी करो। C2 इलेक्ट्रोलाइज कर प्रोस्पेक्ट। ओ कॉन्स्टलेशन पे ध्यान दे दिए। ट्रिपल क्राउन भाई, नॉर्मल तक क्राउन किए। ओके एक्स्ट्रा ठीक है। रेशियो क्या है? 53 पे 250, 53 प्लस 30, 83 पे 250। अच्छा है, अच्छा है। चलो ब्रो हम चलते हैं और ये आराम से पुणे जेंशन में फार्मिंग करेंगे। जाओ जाओ काम करो, जीएफ को भी बोला के आ जाओ स्ट्रीम पे कहीं मत जाओ। जस्ट किडिंग जस्ट किडिंग। ईआर कम नहीं है क्या? एनर्जी रिचार्ज कम है? भाई यही तो होता है, ऐसे ऐसे पीस से तो नहीं मिलता। मिलता है तो वन ऑफ ब्लू मून जैसा, तो वैसे भाई देखो एक पीस खत्म नहीं हुआ भाई दूसरा निकल गया। बोली भाई कोलम्बिना निकाल देगी और दोनों ड्रैगन 300 या 200 प्लस। अच्छा नहीं यही दे देना, क्या बोलते हैं एनगल्फिंग लाइटनिंग ही दे दे उसको और ईआर साइंस पे। भाई बताओ भाई तुम लोग कोयोवर्स को ऐसा क्या देते हो ऐसा पीसेस मिल रहा है भाई, ये देखो और बोलते न्यू हो। और फ्लेंस का तो यार 160% रेट 105 और 9
भाई देखो, बिल्ड बहुत बढ़िया है। ऐसे आर्टिफैक्ट्स कहाँ से मिलते? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं भाई, होयोवर्स को ऐसा क्या दिया भाई तुम लोग को ऐसा मिल रहा है भाई? ये क्या है? 1020, 1120, 720, ये 734 है भाई। मतलब हम ही है भाई जो ऐसा पीसेस में बैठे। होयो की मेहरबानी है, एग्जिट भी करते हैं ऐसा आर्टिफैक्ट भाई। इसमें भी बढ़िया है भाई, मतलब कुछ वेस्टेड स्टैट्स नहीं है भाई, जो चाहिए था उसी में गया है, प्लस ईएम भी है। इसमें भी ईएम है। ओवरऑल बढ़िया बिल्ड है भाई, बट मुझे जितना लग रहा है एनर्जी रिचार्ज थोड़ा कम हो रहा है, पता नहीं क्यों। यार मतलब अब C1 है, मतलब C2 है, C1 पे तुम 3 बार जो स्पेशल बर्स्ट है वो यूज कर सकते हो। 7.5 आउट ऑफ 10 भाई। मैं 8 दे दूंगा, अगर ईआर होता था तो फिर और 9 पे डाल देता था मैं। 8 आउट ऑफ 10 तो दे देगा मैं, सिंस रेशियो के साथ है ऐसा। इनफ भी है। तो सिंपल कौन सा रहा है भाई? भाई तो टूट गया, बाय बाय। अरे अरे हाँ आराम से। ओवरऑल अच्छा बिल्ड है, बट एनर्जी रिचार्ज का बता दो कि कोई अगर फबोनेस यूजर है या नहीं करके। रिटर्न भाई अगर वो चैट पे बता देना क्या है। ये क्या करना था मेरे को? स्टिजन पे और लेवल मैक्स करो। ये करना था उनके पास, जैसा कल आए थे ना अपना जाओ भाई, मोरा की कमी, शायद वही वही हालत होनी थी। इट इज पॉसिबल यू नो। भाई सबका सेम हालत है, सब सही भाई। तो पहला था रे। एक सेकंड में क्या रखा है? क्या होता होता भाई, इनको फ्लैशबैक करके एक सिस्टम रखना चाहिए, कोई आर्कम क्वेस्ट रिपीट करने को नो रिवॉर्ड बट ओके फॉर मी। भाई ये क्या होता है? ओके फॉर मी क्यों होता है भाई? वाई ओनली यू स्पेशल ट्रीटमेंट है भाई? आपको ही स्पेशल ट्रीटमेंट है, हमने क्या बिगाड़ा है? बार बार उसी पे जा रहा हूँ। स्पेशल ट्रीटमेंट की इतनी जरूरत है? देखता है इसको 49 से कम कर सकते हैं तो। लॉक इन करके देखते हैं इनको। लॉक इन बोलते ही हक दिया भाई पहले इसमें।
連気過信入れよ競争よ力मर गई ये। 人物遠くを抱えよう直前にはと天心直送यार नॉट बैक हो गया मैं थोड़ा सा गेमिंग करने चला भाई सी और छोड़ 人物お披露目だ具現せよはっほって律令に従え無に帰す力をふっやっはっはっはっガジャーそれ冷凍の自覚連気過信光り輝くがいい目も舌も満足させてあげるレックほっ具現せよ競争よ宴会に沈め満ち溢れよकॉन्टिनेंट के ऊपर थे कुछ तो गड़बड़ किया मैंने कुछ तो गड़बड़ किया レック遠くを抱えよう魂よ律令に従え熱力を低温調理連気過信ってふっ歌え僕の名のもとに人物ガンのように羽ばたけ競争よ決心となれ星々静かに眠れ Yes yes 126 अब इससे कम तो नहीं होगा भाई मेरे को जितना लग रहा है रिकॉर्ड तो नहीं होगा मेरा रिकॉर्ड तो नहीं नहीं प्रीवियस नहीं तोड़ पाया मैं बात नहीं एटलीस्ट कुछ तो हुआ कुछ नहीं शुरू Anyways, कम तो हो रहा 126 हुआ ये बढ़िया नेक्स्ट वाला और टफ होगा करके बोला गया था देखते हैं क्या मिला वाला अब क्या करें कुछ क्वेस्ट बाकी है क्या तो रिक्वेस्ट ये बाकी है कुछ नहीं करना पड़ेगा टोटल डिपोज Just rely on the ocean's self-cleaning ability.
Total depot bounce. एक्सरसाइज चलाने में आजकल बहुत मजा आता है पता है Meow. क्या हो रहा है चला दे इसको Oh, it's you. One second. Now activating chat mode. ये भाई You made स्नीक me अप हुआ था jump क्या हुआ there. I thought they'd finally caught me. Well, my heart rate did. Jumped up a little, I mean. Objectively speaking, the trouble was entirely of my own making. Half an hour ago, I was at Hotel de Boer for a drinks reception. It was to celebrate the successful opening of a show, but it was draining my energy. So, I waited for the right moment, then snuck away so I could switch to standby mode. Probably because I'm playing the lead role in the show? Is that so surprising? I'm always getting invitations to do solo performances. I just usually get Linny to write back and turn them down. But then came the Fontanalia Film Festival. We took all the kids from the House of the Hearth out to see a film, and after it finished, they all started clamoring for me to try out acting for some reason. Even Linny was chanting along with them. क्यों लग रहा है मेरे को इसका आवाज बदल गया है Anyway, it just so happened that a director called Mariu had sent me an invitation right around then. I'll spare you the details, but basically, I ended up accepting it. Yep, you nailed it. I'm playing the role of a puppet. In fact, the show's called The Lost Puppet, and it's a masked mime show. So, I don't have to do any facial expressions or say any lines. Literally just a series of physical movements. The director says it's a very avant-garde art form. Art is not comprehended by the mind, but felt in the heart. At least, that's what the director says. Anyway, if nothing else, the opening performance seemed to go down well. At the drinks reception, everyone was crowding around me, saying, "Triumphant character portrayal, faithful adaptation of the original work, unequivocally, quintessentially avant-garde," and stuff like that. But being the center of attention is draining. So the moment they left me to go harass the director instead, I was out of there. The other thing is, some weird things happened while I was on the stage. Oh, sorry, Bonnie. I didn't mean to leave you out of the conversation. My bad. No, we just met. We bumped into each other right after I slipped away. Well, it'd be kind of difficult for us to communicate otherwise. Besides, I think she's taken a liking to the name. Haven't you, Bonnie? Yeah, that's right. Good kitty. We'll go find your owner soon, I promise. Nope. She's wearing a collar, and for the most part, she's pretty well groomed. If she is a stray, she hasn't been for long. Her stomach's been growling a lot. I guess she must have been missing for a few days now. As much as I'd love to hang out with her for a while longer, her owner's probably worried sick about her. Assuming she has an owner, that is. But the reception... I should probably show my face there again at some point,
even if it's just to make excuses and leave again. 17 सिग्नेचर करके आए मैंने अभी। क्या ले रहे हैं एकदम? अरे पागल हो रखा है। I just 10th find की it मार्कशीट, 10th का exhausting, पास सर्टिफिकेट, 10th thinking की through all एडमिट the कार्ड, different आधार कार्ड, ramifications of वोटर different वोटर कार्ड तो है choices ही and नहीं। so on. आ, That's more पापा का Lily's पैन area than कार्ड, mine. पापा का So, आधार कार्ड, unless it's मम्मी का something आधार really कार्ड, मम्मी का important, पैन कार्ड। I ए usually भाई just leave पागल the हो गए decision मैं। making to him. It's fine. He got ये Fermini to वोटर make me a little वोटर something लिस्ट में for नाम just उठा the देंगे भाई। situation. क्या बोलूं मैं? Poof! A phaetometer. It looks pretty over the top, I know, but it's essentially just a box of cards. हम He kept the लिनेट design का simple ये so it'd be करते harder to break. The way it works is, I pick a card at random, then look at the number on the card. हैं। Well, for example, if the number on the card is 5 or Correct. higher, I help Bonnie find her owner. If it's less than 5, I go back to the reception. I just have to believe in the bond between me and my cards, and my fate will reveal itself to me in numerical form. At least, that's what Linny said. क्यों लग रहा है लिनेट का Anyway, आवाज I guess Yeah. I'll give you a demonstration. अरे वो तो ठीक ही है। मैं अभी चैट पढ़ रहा था पिछले। शेखर सिंह जी बोल रहे चलो ब्रो हम चलते हैं, जीएफ बुला रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ मैं क्या बोला उसका रिप्लाई पता है? एक काम करो जेएफ क्या? को ये को भी स्ट्रीम पे लेके आ जाओ। Huh, I didn't like that. मैं Was I अगर using it बोलूँ wrong? नहीं बोला Just था मैं kidding करिए, कुछ just नहीं kidding करिए बोल रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा था। Clearly, मैं कुछ there's नहीं some बोल रहा। design flaws to iron out. I'll have to let Fermine know. Let's see, which card did I get? 4. Well, सिर्फ हम लोग ही हैं। the cards सिर्फ fell हम on the लोग ही हैं। ground though, so I don't think it counts as fate. If you want to get the right answer, you have to एसएसआर let भाई का fate सोचना नहीं decide. है। मेरा फ्लिक्स Also टाइनो something 400 Linny के है, said. बट यलान के So, साथ to put it 700 के। another way, if picking a card up off the ground is how to not How? leave it to fate, then that means I it would must not be the know wrong the answer. answer, but fucking भी चांस है। It ain't theoretically possible and practically possible. Fucking mean. Why don't you pick a card? Since I ran into you here, that means our fates are like interfering with each other. शकल देखिए लिनेट का। जाओ इसे देख रहे हैं। लाइन सुनो और पूरी शक्ल नहीं है। हाँ देखा था। Or सिर्फ तो खुला ही हुआ है। why don't you pick a card? Since I ran into you here, that means our fates are कितना like प्लस्टर हो गया है? interfering with each other. जरूर। Thank you. This one is final, I promise. Here, take the phaetometer. If it's 5 or above, that means fate successfully changed. Anything lower than 5 is a fail. Also, if you have your own thoughts about what I should do, feel free to share it. उफ, Now that I've got a good problem solver here to help, I don't need to run every रात little thing इतना by बंद fate. क्यों है भाई? कुछ ज्यादा राग बंद नहीं है मेरा। मेरा तो नाक बंद था भाई, मेरा तो आवाज गया था। वो स्किल इशू। ओके ये है So, we're looking for Bonnie's owner? हट्टू वेटर, हट्टू वेटर, हट्टू वेटर, हट्टू I वेटर। think I'll go to the Steambird Hut and see to about waiter. putting an ad in the paper. You want to come along? I think Waiter. Bonnie wants you to come with. एक्सक्यूज देख रहा है। मोहनी बोलती है आने के हट्टू और वेटर। बिल्ली बोलती है नीचे वाली बिल्ली कि तो मेरे साथ हो गई नहीं। ये क्या यार रेस कर रही है ये? होता है इसको जापानीज में इंटरनेट का आवाज पता नहीं इंग्लिश में क्या हो गया सबसे
वही ना सेंड्रो ने आई थी ना लिनेट लिने और ये फेमिने हाँ लिने को बोलता है ये कर लिनेट फेमिने को बोलता है वो कर सेंड्रो लिनेट को क्या बोलते हैं कुछ मत कर तू कुछ भी छूती छोड़ जाता है 素晴らしい一日はスチームバード新聞から。こんにちはリネットさん、旅人さん。 कोनिचिवा हो रहा है ना कोनिचिवा Just いいえ、なかったと思うけど。子猫を拾ったのかしら。はい、依頼がないなら逆に尋ね人の案内を出してもいいですか。ええ、もちろん。立派な心がけね。こちらから申し込めるわよ。申し込み完了。飼い主が探しに来てくれるまでひとまずうちにおいで。それからありがとう。長いこと付き合ってくれて。私はひとまずパーティーに顔を出しに戻る。だいぶ時間が経ったからほとんどみんな帰ってるといいけど、明日もし暇ならバーニーに会いにうちに来ない？いいお茶を入れるから。うん、待ってるね。 वो तो है घर पे कैसे बुला रही है भैया हाँ पूछो पूछो it's not like मतलब फेमिने वो सब नहीं रहेंगे you know टेंगीज क्या किया उसके पास क्या किया 300 टूल्स है वो नहीं 3 कैरेक्टर तो निकल गए ना 3 कैरेक्टर letting देखो fate deciding capturing radiance करके I believe this cat belongs to me. I already told you, this isn't your cat. Just take a breather, you two. Oh, you're here. As you can probably see, you'll have to take a rain check on that tea I promised you. At least for now. This is my friend's cat. He's preoccupied with some important business, so I came to retrieve her in his stead. too cold I should check for special type of center you will be actually to the answer of the course of the world. Because you will find some more information. No. It's far more likely this cat escaped from the Humane Society. Unnatural. Bonnie? That's the name I've given her in the meantime. First drop of written by the market of the number is greater than or equal to the share of the fail. कौन सा नंबर है भाई कौन सा लैंग्वेज का नंबर है ये हाँ पूछो हाँ who the fuck knows ये 8 है ना yeah it's 20 8 है ना ये yeah 8 है 20 है 8 4 5 6 7 8 ठीक है हम 8 वाला था गलत है क्या 6 आया हद हो गई भाई चल Well, this complicates things. I told you before. This is my friend's cat. It's normal for her not to trust me. Listen, I'm the director of the Humane Society, okay? We've got so many strays, dogs, cats, you name it.
I'm not even the one feeding them most of the time. You can hardly expect the cat to recognize. She just looked somewhat familiar, so I came to check, just in case. If she turns out to be one of ours, I'll take her back. Simple as that. Even if that's not the case, the Humane Society could still take her in, if no one else comes to claim her, that is. We're an organization that specializes in rescuing and sheltering stray animals. We've been in business for several decades now. I'm Bernard, the current director. The Humane Society. Huh. The name sounds familiar. I remember hearing good things. Near the one in the Quartier Lyonnais? Yes, that's the one. Anyway, if it's not too much trouble, could I possibly take a closer look at If it turns out I really am mistaken, I suppose that means the cat belongs to this lady here. She would be the only remaining option after all. It belongs to my friend. Go on, Bonnie. Oh, nope. Looks like I was mistaken. They do look similar, but there's an ever so slight difference in this one's fur color. Deepest apologies, friends. Well, I suppose this means I still have a missing cat to search for. Apologies again for the confusion. Yes, exactly. Wait a second. You lied earlier, didn't you? Lied? I'm afraid I don't know what you mean. A liar always has a tell. The look in their eyes, their breathing pattern, the way they hold themselves. The things that can give you away are often more numerous than you would think. What are you talking about? The way I see it, you're conflating baseless conjecture with fact. Normally, when someone is called out, their breathing speeds up as they begin to panic. But your breathing pattern hasn't changed one bit. In fact, it's been strangely calm and measured this entire time. It stands to reason, then, that your agitated behavior earlier was all an act. If you're a bad guy, I'm sure you'll take off running the first chance you get. If you're a good guy, the most likely explanation is that you're a member of the guards, or some And you're basing this off of? intuition. Nothing more. Intuition. Well, I have to hand it to you, Lynette. You're right. I'm a member of the guards. The name's Melody. I'm currently investigating a cross-border smuggling case. This cat here, Bonnie was her name? Well, her owner is one of the prime suspects of our investigation. A couple of days ago, our suspect got wind that we were on his tail and fled. That's most likely how he got separated from the cat. I just so happened to stumble upon your notice in the Steambird. So, I decided to see if he'd come back for her. But it looks like I overestimated him. The impact of this case has been huge. The Marechaussee Phantom, the guards, and the Special Patrol have all launched investigations. If there was even the slightest chance that he would show himself, I had to follow up on the lead. A new kind of illegal drug. Imitation synth. Synth? वापस synth आ गया है? We confiscated all the synth on the market, but addiction isn't something that goes away overnight. Even without substances on the market, people are still looking for a way to get their next fix, and criminals are all too eager to capitalize on that addiction. That was the impetus for imitation synth. Needless to say, a small-scale market opened up very quickly. After the original synth debacle, we put several measures into place to prevent similar incidents from occurring. The perpetrators got smart, though, and shifted their sales overseas before those measures could kick in. We only recently got word of the presence of imitation synth overseas. We managed to track down evidence of some early transactions. What we were able to find out, however, hasn't proven that useful given the amount of time that has passed. I agree. The Marechaussee Phantom launched an investigation to track down every person in Fontaine capable of producing a drug like that. That's how we learned about Bonnie's owner. He's a researcher at the Fontaine Research Institute. His name is Pierre. Dr. Baiju is back. Pierre Lafayette, to be exact. 14 तारीख को बैन हरा रहा है ना? हाँ 14 तारीख को मैं आऊंगा घर पे शाम को उससे पहले मैं पुल कर लूंगा सुबह 8:30 बजे के आसपास ही आने वाला है मैच। 8 से पहले याद है 8:30 से पहले
और मेरा Precise time. आखिर क्वेस्ट भी हो जाएगा. Lefebvre. The Marechaussee Phantom found him in Poisson. In addition to the cat, he also had a pendant with him. At first, there wasn't much cause for suspicion. Now wait, The the search of his house question didn't is, reveal much do to go I off of have either. to? The Marechaussee Phantom very nearly left it at that. It was only later that we realized the coat of arms on his pendant belonged to Do you have none to other what? than the Lefebvre family. One of the most infamous aristocratic families in Fon. Obviously, this discovery prompted a further investigation into Pierre. At that point, however, we discovered that he'd already fled. Now the guards and the special patrol are all searching for him. That's not possible, actually. The Lefebvre family has been gone for a long time. Do you have to Exactly. what? Many years ago, several important members of the family, including the patriarch, were murdered by an assassin of unknown origin. From that point on, family's power and influence took quite the hit. The family is engaged in all manner of crimes. As you can imagine, there's no shortage of people waiting in the wings to take their revenge. And with the family severely weakened, they were able to do just that. Most of the remaining family members succumbed to sickness or hunger. The ones that survived are currently living out their days under a new identity. Pierre is one of those very survivors. He's been hiding away in the Fontaine Research Institute all these years. His true identity unbeknownst to all. Well, my fellow guards have told me all about how smart and courageous you both are. And I know you possess a strong sense of justice. There could be a chance that Pierre, or one of his accomplices, might attempt to get close to Bonnie. Now that you've been briefed on the situation, I was hoping you'd help us keep a lookout. If I take Bonnie back to the guards with me, there's no way Pierre will try and come for her. Not even the most daring of criminals would attempt something like that. I have to admit, I'm not holding out too much hope that Pierre will come back for her. But if there's even the slightest chance, well, I've got some other leads to follow up on. If Pierre does appear, please contact me right away. It's nothing. I'm fine. It's just Okay. the head of the Lefebvre family. बोलो. Do I He have was the to? eminent person know, who kidnapped me all those years ago. Columbina. Yes. 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 It was at a dinner Yes. party. Someone tricked me into boarding the Lefebvre family carriage. Whoever it was, So, they वो took आइसो me का back to आइसो their कर तो home. था. But Bro, before distraction. anything वो worse वाला. could happen, Direct. Father intervened. Yep. Father was the one who orchestrated the fall of the Lefebvre family. That's what led Lenny and I to join the House of the... After all these years. I never thought I'd hear the Lefebvre name. Don't worry about me. I wasn't feeling sorry for myself. I was just thinking about he's been acting strange recently. He avoids me for days on end, consumes himself with some secret investigation, and then thinking about it now, it's almost like the one I drew from that deck of cards was part of his plan all along. He must have asked Fermine to help him out. In any case, I know he's hiding something from me. It's very possible. I'm sure he tried to send me away because he was afraid it would bring up some painful memories for me. Even after all these years, he's still as overprotective as ever. You'll have to help me teach him a lesson if we run into him along the way. Yep. I want to head to the Fontaine Research Institute to learn more information about Pierre. Just let me activate search mode and then we'll head out. Who लिबरेट तो knows? 5 दिन के लिए आया ना. Maybe we'll run into Linny along the way. लिबरेट तो 5 दिन के लिए आया है. Yeah. A little bit of both, perhaps. For the most part, though, I just have the sense that Monday to something's Sunday not तक रहेगा. right. Monday to Sunday रहेगा. Something isn't adding Yeah. up about Pierre's story. I'm just not sure Monday to what. Sunday रहेगा. Monday को decide करो. Okay, I'll write a letter explaining everything to the crew. Once that's done, we can head out.
लिनेट को देख के बोल के हैं उन्हीं चैनल का है कि हाँ Lynette, you're not at rehearsal? You can Yeah. drop the act, brother. In fact, I don't think Fucking either of us will have a need for Dwight acting anytime and soon. Lily You should there. know better than to try and keep something from me. You've never been able to do that, even when we were kids. And that's why I tried to distract you with the masked mime show. But I guess you're just too good. Care to introduce us to your new assistant? This is Officer Shovras, captain of the Special Security and Surveillance Patrol. You may have met her already. Nice to see you. I should You clarify gained one something. more subscriber, Mr. two Lin more is here at my subscribers. invitation, not the other way around. You gained To two borrow your more expression, Miss subscribers. Lynette, I suppose that would make him my serious? assistant more than anything. Yeah. 32 हो We've गया. brought on Mr. Linney as a consultant in the past. He was instrumental in helping us crack a case involving a perpetrator who used magic tricks to commit crimes. So you've heard everything then? That's exactly why we're here. There's always been questions surrounding the fall of the Lefebvre family. Some people even believe the House of the Hearth was involved. Whoever was behind it all was extremely cautious. They didn't leave a shred of evidence. This very fact, however, leads me to believe it was indeed the work of that harbinger. I took a look at the entrance and exit records of all the carriages that night. Let's just say it wasn't hard to deduce that there's ill will between you two. Don't worry, I don't have any evidence to that effect, and I certainly don't plan on going to bat for such a despicable family. Plus, you were victims back then more than anything. I sought Mr. Linney's help with the smuggling case. Nothing more. The way I look at it, it's a collaboration between us as people, not the organizations we represent. Besides, by working together, we can expose the truth as quickly as possible. You can hardly say that's at odds with the justice my organization strives for. Not at all. I was planning to invite you from the very beginning, Miss Lynette. It's just that my assistant here raised some objections. Linny, I'm not the same person I was back then. That little girl who did nothing but cower in the corner in fear, she doesn't need saving anymore. I'm sorry, Lynette. You're right. I let my concerns get the better of me. Oh, and the next time you want to distract me, you should try a different approach. इसको केक दे दो बस हो गया. Who's this? You pick up a stray while I was gone? It's a bit complicated. I'll explain later. Anyway, her name's Bonnie. Well, if there are no objections, then I suppose the only thing left to say is... Lynette, Traveler, welcome to the team. It appears the Lefebvre family was very particular in their use of insignias and emblems. The family would use different emblems to mark differences in status, blood relation, and the like. In fact, the insignia that was discovered on the pendant was used to represent an illegitimate child. It's highly likely. That very status might have been what allowed him to emerge from the fall of his family relatively unscathed. It would also explain why he was able to assume a new identity as a researcher with relative ease. We discovered something interesting, though. After talking to some of his co-workers, it appears he pretty much works at the Institute in name only. Apparently, Pierre was once addicted to synth. He tried to use the resources at the Institute ये to सेंट create वही है a ना substance जो with a मतलब similar सबको effect. सेंट बना देता. Yes. He claimed it was just for research purposes, but the Institute revoked his access to the relevant materials regardless. He was but it seems the Institute ran into some trouble along the way. Could have been a lack of personnel or a timing issue. In any case, they had to table their formal investigation into Pierre. As for his family background, it appears none of his co-workers at the Institute were aware of that information. All they could tell us was that he was quite the recluse. Other than the pendant, we didn't find anything else of note at his residence in Poisson. Based on the samples of imitation synth we've been able to analyze, it appears the substance leaves behind strong traces wherever it's produced or stored. Those traces might not be obvious to the casual observer, but they're not something our guard poodles would miss. Pierre's home, though.
came up completely clean. We didn't find any records indicating possible involvement in overseas transactions either. So, the Marechaussee Phantom didn't view him as a major suspect at first. Maybe he had a separate, dedicated area where he made the imitation synth. Well, his neighbors did say he was often gone for long stretches of time. You would think with him out and about so much, people would have spotted him around Poisson, but residents said they barely ever saw him in town. If his reclusive nature was just a matter of keeping a low profile, I guess it would make sense for him to have a secret base to carry out his business. After he disappeared, the guards conducted a thorough search of Poisson, but they didn't come across any suspicious locations. Poisson. You know Hotel de Boer, where I first found Bonnie? To get there from Poisson, you have to cross a stretch of ocean. It's not somewhere a cat could just wander off on its own. A cat? You mean... Bonnie is Pierre's cat. Oh, that's right! When the Marechaussee Phantom first tracked him down, I remember there being something about a cat in their report. So this is her? From what we've learned about Pierre's habits, he doesn't seem like the type to venture out without a purpose. So what you're saying, Lynette, is that Bonnie couldn't have gone missing in Poisson. If that's true, then... Exactly. Bonnie might even know where it is. Wait, you think the cat can lead us there? But she's not trained like one of our guard poodles. How is she supposed to understand what we want her to... Meow. Meow meow. Meow? Near the coast, the beach, and beneath the cliffs. The place we're looking for is most likely north of the Court of Fontaine. Well, I've certainly never taken a witness statement like this before. Well, if it works out, maybe it's something worth getting used to. Cats and हो रहा humans है are वो। actually pretty alike. When it comes to communication, most of what we want to convey can be accomplished through body language alone. Of course, body language has its limitations. You're not going to be able to get across anything too complicated. The important thing is that we now have a lead. Let's try and find a place that matches the clues Bonnie gave us. हेलो Hello, we got you. क्या हो रहा है जेनशिन पे है। बीच तो मुझे कॉलेज नहीं जाना मत जा क्या फिर कॉलेज फिर क्लास के लिए निकल रहा हूँ डायसेक्शन है मेरा बेंचो 2 घंटा खुद का जा खुद का Seems like Bonnie's मेरा trying to खुद का take क्या us- खुद का जिंदा होता I mean, you weren't being specific, you know? अरे हद है Choppy है आज। खाना भी यार ढंग का नहीं मिला दाल बाटी चूरमा बेंच चूती है मेरे को कसम से पसंद नहीं है अब आके रेस्टोरेंट से लूंगा फिर दूसरा कुछ और मैं ऑर्डर छोले भटूरे ही लूंगा और क्या लूं राइटली से पूछो स्पेशलिटी बदल देगा वो। मच्छी सूखी मच्छी डोसा डोसा खाओ डोसा हाँ डोसा भी नॉट डोसा इज नॉट अ बैड ऑप्शन यस I am feeling the urge to पर पैक करा के लेके जाना इज डिफरेंट टूथ बांगड़ा एक काम करना Wow, Lynette, you found this place so easily. ऑर्डर कर ले If I कैसे thought there was any chance you'd say yes. ऑर्डर I've तो recruited भैया you to मेरे the घर के special साइड में तो patrol रेस्टोरेंट है here वहीं से and लेके now. जाऊंगा No ऑर्डर के questions पैसे asked. एक्स्ट्रा के दूं मैं तो फिर मैं Sounds familiar. True. I pretty much receive letters daily from people trying to poach her from me. Let's just focus on our search. अभी तो बेंच 2 घंटे बेंच डेड बॉडी में उंगली करके आना है मुझे मां की भोसड़ी जाओ जाओ करके आओ Have fun. खुद की तो कर नहीं सकते डेड बॉडी की करके Aha! यही बोले Just भाई as we thought. This is where the imitation synth was कोई being ना बेटा made. अगले साल तू भी यही करने वाला है तेरी गाड़ लूंगा फिर उसके बाद देखता हूँ मैं भी Looks like he's got करके आओ more than just चल imitation आई डोंट synths केयर मैं stashed कर around चुका हूं here. ऑलरेडी In addition to the raw ये materials बेटा needed to synthesize देखेंगे the वो तुम substance itself, there's a large quantity of cleaning agents कब तक and आएगा? a few drugs I haven't बोला been मैं able बहुत to ज्यादा identify. शॉपिंग की देख लिया। 4 बजे होऊंगा फ्री भाई These cleaning agents are likely used to Like, dispel मैं बहुत traces of ज़्यादा the शॉपिंग की substance, देख लिया। like its smell. अरे यार वेटर आएगा बोलेगा भाई मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग की देख लिया कुछ नहीं है इससे।
The special patrol did some digging into imitation synth. नहीं Our सेंपाई records मतलब indicate that it's ऐसा very नहीं है कि difficult for बेकार ordinary लगता है people बट to ये है detect कि साला traces ना left बहुत ही behind by ज्यादा the stuff. बोरिंग It must have हो taken a जाता है एक टाइम के considerable बाद amount of time and until skill unless you to are see you know those constant traces get washed away. नहीं अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हो नया नया और आप मतलब समझ रहे हो कि But आप what are इसको these पूरी other अच्छी drugs रीडिंग for? अंडरस्टैंडिंग डाल रहे हो उसके अंदर तो समझ आता है तो बंदे को थोड़ा इंटरेस्ट भी रहता है बट अगर आप कांस्टेंट रीडिंग नहीं डाल रहे आपको और कुछ material बातें these बीच में bags अगर are आपका लिंक made टूट of, गया ना समझने का it's quite तो चुप rare. जाता है फिर For me, it's gross. इट विल नॉट बी ग्रोस वंस यू स्टार्ट डूइंग इट पहले 2-3 दिन मुझे भी ग्रोस लगा था फिर उसके बाद मेरे को It's जब the करने very की आदत same, पड़ गई तो फिर actually. हो गया और Romaritime आप तो flower समझो fiber. बाकी सारे कॉलेजेस के But अंदर तो there's ग्लव्स पे आके something करते हैं हम तो special ग्लव्स about भी the नहीं पहनते composition of these bags. I took a Why, closer Bina? look, You! and it appears they're not only even Bro, the strings एक look काम कर specially designed शीशवा to keep भाई the चाहिए bags ना नहीं closed ये nice ले and ले tight. पहला मेडिकल दुकान जाओ बोलो ग्लव्स चाहिए I came across some bags made of the same नहीं material कॉलेज में just पहनने ही नहीं देते now, ग्लव्स but तो they हमें were मिलते हैं much साथ में smaller and अच्छा thinner. पहनो ना Very मिलते similar, हैं तो actually. तो Normally, नहीं it would मना be कर देते easy हैं ना for a क्यों कौन guard मना to करता sniff है out the imitation scent. टीचर्स Idiot. सारे If के it was सारे sealed away in a भाई bag कौन like सा that, कॉलेज से चला गया it भाई might be possible to Teachers elude do the अरे detection हाँ for some कसम भाई time. कैसे क्या और बहाना सोचो क्या देते हैं But what बहाना could देते these थे big bags be for then? स्कैल्पल स्लिप हो जाएगा If the goal is to keep मैं an गांड भी imitation डल जाएगा scent ना भाई तो भी from प्रॉब्लम being स्कैल्पल नहीं तो है sealed सही तो away, है these bags seem a bit too नहीं नहीं तेज होता है सन भाई वैसे conspicuous. तो वो अरे वो आर तेज है ठीक है बट पकड़ना है तो इतना सही तो है वो स्कैल्पल हाँ स्कैल्पल है तो वैसे इतना सही बट लोगों को पता नहीं कौन पागल है जिनके हाथों में से स्लिप हो गया और उनके पीछे चक्कर में साला हमारे पीछे लगे हुए हैं तो हम रोज उस डेढ़ उंगली डाल के आ When रहे the होते हैं Mara वहाँ shows their के Phantom search Pierre's और house, भाई जो फिर उंगलियों में से there was no फॉर्मूलिन की sign of स्मेल these आती है ठीक barrels, right? You're right. That doesn't seem like his way of doing things. क्या ही बोलूँ अब मैं इसके बाद मेरा खुद का ही मूड खराब हो जाता है हेलो Only तक है the मतलब lower हाँ, halves of the कॉलेज कभी barrels से कभी appear तक to है have been submerged in water. कभी से कभी तक है अभी 8 बजे से तो गया ही हुआ था 1 बजे ब्रेक Based मिलता है on the 1 से 2 various ingredients we फिर 2 found, से 4 फिर 2 this घंटे appears की to क्लास be where होती Pierre was cooking up his 2 से imitation 4 scent. वापस सही है 8 से 1 रहता है मंडे क्या ट्यूसडे वेडनेसडे हैं 8 to 1 फिर 2 से 4 हाँ It looks like he used a special cleaning agent to get rid of any residual traces of the substance on his person before he left. That's how he was able to get past the guard poodles. इसमें भी लवड़ा सीनियर्स बेंच चूती है So then he transferred the imitation scent Senpai into है, वो small लोग तेरा- sealed bags and took it somewhere else for the जो सीनियर drop-off. दिखेगा बेंच जीन्स में दिखेगा और लड़ा उसको हमेशा No. गर्दन झुका के I don't हेलो believe our हेलो suspect हेलो is the kind of person नमस्ते who'd गुड go मॉर्निंग around गुड carrying मॉर्निंग incriminating evidence with him. That दैट्स would potentially... The cleaning agent and the sealed bags might get past the guard पहन poodles. के रोड़े हैं But हमारी if a एज member की of गांड the अपनी public मरा रहे or हैं even खुद a बोल guard के on फेल patrol फेल हो happened to रखे see him during the इतने सारे drop-off, टर्नों फेल हुए a बेंच quick search would reveal everything. That's still a very risky operation. और अभी मैं क्या ही कहूँ मैं खुद just focus on yourself मैं खुद अभी इंटरनल barrels हाँ we मैं found were खुद wet around इंटरनल the देख के मेरे को base, लग रहा है but मैं the फेल ना top हो जाऊँ half बेंच was पे मेरी भी dry. लोड़े लग जाएंगे और एक नहीं what is this sir Upright in ये the क्या हो wall. रहा है मतलब घर वाले चोट देंगे कसम से कहेंगे बेसिडी If you put a barrel in the water, it Yeah, will like- normally float on its side. Unless it's अभी माँ heavily अरे यार आज तो मंडे है भाई वो इतनी गंदी बात Yes. मारेगी बहुत छी If भाई flotation rings around the body of the barrels, they'd बात stay upright मारेगी in the भाई। water. And अरे then वो they सैड could संडे afford को to हमेशा load ना them more फॉर्मूलिन टैंक के fully. अंदर चली जाती है बॉडी तो फिर अरे जब फॉर्मूलिन टैंक से ये- बाहर आती है भाई वो पूरी माँ कसम Suppose if he acted at एनाटॉमी night, की there लैब are very भाई few माँ other पूरी boats around. गेट खोलने Visibility पड़ते is भाई low. दोनों साइड के उसके But इतनी then गंदी कर wouldn't रखी the हुई है वो barrels इतनी be carried तेज off by the स्मेल आ रही होती है waves or the currents? भाई आँख How जलती would the है person पता doing दिल्ली the वाला pickup पूरा know where to एनवायरनमेंट look? जैसे अंदर से सांस जा रही है तो वो जल रही है आँख से जा रही है आँखों में कुछ जा रहा है तो वो जल Traveler, रहा है can you come take a Bhai. dip in the sea with me? I have a feeling that Maa somewhere kasam. down there, we might find some rope. यही If बोली a rope can be used to keep a pet from running away, then फिर उसके बाद why not a barrel? फिर बेंचेस की गांड लंड दिखते रहो वहाँ क्या Wait, पड़े ये तो क्या बोलते लाइन है यार ये क्या बोल रहे हैं चल 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 तो नहीं बोल रही वही बोल रही है चलो तुम जाओ मैं आ गया well have fun हाँ क्या है फन इसमें बेंच सूप बांग सूप बोलता ले सो जब उंगली करेगा ना तो
एक बार नाक के पास भी ला लियो। भाई भाई वो मसल में खाना उंगली खाने कर जा रहा है, रहा है भाई, गांड वो में नहीं खाना भोसड़ी के। खाने जा रहा है भाई, ठीक है। कौन जा रहा है खाना खाने? भाई मेरे साथ तो बात मत करो फिर। खाना खाने जा रहे हो। भाई तू खुद ही तो बोला खाना खाने जा रहा है करके। कौन जा रहा है खाना खाने? मैं तो हो गया तू फ्री भाई, खाना आगे वापस आ गया कॉलेज में। आओ। और अबे क्या? हाँ ना, फाउंटेन तो डाइव कर सकते। जाओ जाओ। The wreckage चलो of a खत्म है। small boat? This isn't the place. This isn't the place. Got it. Time to go up and report. As expected, we found a few pieces of rope and some anchoring stones underwater. If you attach them to a floating barrel, it would look like this. With this anchoring system, it would be possible to use floating barrels for the drop-off. You would just need to drop them in the water at the agreed-upon location. We also came across the wreckage of a small boat. It must have been left out on the water and capsized due to the force of the wind and waves. Its small size, however, would have made it perfect for staying undetected. Let's talk this through. Based on the evidence we've collected, it seems like Pierre would row a small boat out to the agreed-upon transfer point, drop off the barrels, leave, and then row back and retrieve them after the transfer was complete. It could be that he was trying to avoid meeting up with his associate face to face. As one of the sole survivors of the Lefebvre family, maybe he was just used to that sort of elusive lifestyle. It seems like Pierre deliberately chose the floating barrel method so that the goods could be dropped off and picked up at separate times. That way, the two parties wouldn't have to meet each other. Well, if that's the case, they must not have a very close working relationship. Let's not jump to any conclusions just yet. Assumptions can be detrimental to solving a case. It's possible they were just trying to keep a low profile. Two boats sailing to the same location at once could be too conspicuous. The most important thing is that we can now confirm Pierre wasn't acting alone. The floating barrel drop-off system is proof enough of that. Let's say for now that he was only in charge of producing the imitation synth. That would mean there has to be at least one other person involved in the operation, likely in charge of transporting the goods across the border. Since we've determined that the goods were transported by boat, maybe we can track down some travel logs or something. We can certainly check the various ports for that information. It's possible, however, that Pierre's associate also used a small boat for the transport, and docked along the shore rather than at a large port. If that's the case, it's unlikely there would be any record left behind. Absolutely. Before Pierre disappeared, we made sure to investigate all sorts of outward-bound vessels. We also had port authorities keep a lookout for anything suspicious. Unfortunately, we were never able to find out how they managed to get the imitation synth across the border. You're right. Whatever vessel was used for the pickup, the person responsible for smuggling the substance out of Fontaine would have had to use a larger vessel for the actual transport. That's the only way they would be able to smuggle on a large enough scale to make a profit. They must have found a way to disguise the imitation synth to clear port inspections. Exactly. We can't let any opportunities slip through the cracks. Although, given the amount of ports that could be involved, we should probably split up. I'll run home and ask some of my brothers and sisters to try and dig up some information. I should also head back and update my platoon on our progress. I'll grab some reinforcements while I'm at it. Lynette, Traveler,
Why don't you head to Lumidu's harbor and see what you can find out? All right. Come on, Bonnie. You too. Lumido's harbor कहाँ है? Content में दो harbor है हाँ? It's like a scene from a fairy tale. How pretty. Oh, Lynette, traveler. And Bonnie, too. What brings you all here? वही वही बन गया है. Did something happen? Oh. I see. Thank you for everything you're doing for the people of Fontaine. I'm in charge of guarding the port. You mentioned you were after some travelogues, right? I can go fetch those for you. Looks like I've got another hard day of work ahead of me. No, not usually. It's this incident that happened recently. Before that, everything was normal. All we had to do was confiscate anything suspicious and we could call it a day. Pretty simple stuff, but things are much more complicated now. We somehow let suspicious cargo pass through the port undetected. Not even our guard poodles were able to sniff it out. Even worse, we still don't know how the perpetrator was able to conceal the goods so... By suspicious cargo, do you mean imitation synth? Yep. However, prohibited substances are just one example. We confiscate all sorts of contraband during the course of our inspections. Oh, जादू करने जा रहे हो? So what happens to the goods you confiscate? जादू करेगा धूप. अभी जा रहा है कब तक जा रहा है? अभी Oh, we keep them in a storage पकड़ लीजिए locker. 1 घंटा. If they turn out to be something particularly... if the goods are only slightly suspicious but could otherwise be harmless, like Even I have to materials be. that could potentially be used to create contraband, Yeah. we return them to the ship they were confiscated from, Yeah. instead of letting them pass through the port. Sorry for the wait. These are the travelogues for all the recent activity at the port. Oh, you brought Gerard with you. Actually, he followed me here himself. It's like he smells something on me. Huh. I wonder why Gerard is reacting to you two so strongly. Huh? We were so careful not to touch it, but we still ended up with traces on us. If it leaves a residue so easily, I just don't understand how the culprit was able to disguise the goods at all. Why don't you have a look at the travel logs first? All ships coming in and out of the port are recorded here, except for the ones the port authorities ride to and from work. The Humane Society. Their name is all over the exit logs. The purpose for leaving is always listed as The director of the organization explained that, actually. He said a lot of the cat and dog breeds unique to Fontaine are also very popular overseas. So, his organization offers an overseas adoption program. Bernard, the director of the Humane Society, was the man who came looking... Have you figured it out too, Traveler? The way the criminal disguised the good... When Bernard asked to take a closer look at Bonnie, he was actually checking whether there was any imitation synth in her stomach. Wait, what? The sealed bags we found at the secret base. They were specially made to be corrosion resistant. And there were gaps around the lids of the barrels, and airbags were used to keep them upright in the water. Those drug shovers found at the secret base, she most likely didn't recognize them because they're not used on human beings. It's an anesthetic used on pets. The perpetrator must have given it to the animals. Pierre must have made the animals swallow the sealed bags full of imitation synth at his secret base. Then, he stuffed them into floating barrels and left the rest to Bernard. The sealed bags combined with an animal's body odor would certainly be enough to mask the scent of imitation synth. During our inspections, we would have never thought to inspect the bellies of those animals for anything suspicious. Even if we tried to feel around for something, I'm sure it would be difficult to detect. Exactly.
I bet Bernard even transported animals with synth in their stomach alongside ones without. That way, it would be even harder to say with certainty that something was amiss. She's probably in the clear. Otherwise, Bernard would have never left without her. I'm guessing he didn't know whether Pierre had already hidden the next batch of imitation synth before he fled. Just imagine. He sees the notice we put in the Steambird, and it turns out that one of the very cats he gave to Pierre for the smuggling operation is out in the open, roaming the streets of Fontaine. If Pierre had already hidden the next batch of imitation synth, then Bonnie would practically be living proof of their crimes. He would have had no choice but to go after her. So, that's why he came to find you and insisted on taking a closer look at the cat. Wait a second, I'm a little lost here. I get the part about hiding the substance in the pets, but those, what did you call them again? Floating barrels? Why even put the animals in there? If you've got something as convenient as a floating barrel, why not just stuff it with the imitation synth directly? Why not wait to hide the stuff until after the exchanges? In order to make sure the animals could swallow the sealed bags, they made them extremely thin. Had they not done that, the animals would have likely bitten or chewed through them. That step would have required a lot of energy, as well as a certain amount of technical expertise. So, it was better left to the more experienced Pierre. We've already proven how easy it is to pick up trace amounts of imitation synth, so I'm sure Bernard was taking all the precautions he could to avoid the same fate. Okay. Then, let's head to the Humane Society right away and bring that guy to justice. I'll bring a Gardamek to speed up the process. Sorry, but I can't go with you. Surely you'll be able to handle him, what, between Elodie's Gardamek and all three of you? The headquarters of the Humane Society should be somewhere around here. Bernard could show up. You're the people from earlier. Wait, you're from the guards? After him! We can't let him get away! Give it up, Bernard. Mercy. Have mercy. I'll talk. I'll tell you. The Humane Society has done so much good over the years, and yet you have committed such an atrocious deed in its name. Look, I didn't have a choice, okay? My father cared about those blasted animals so much, he didn't bother to take care of his human wife and son at all. While those animals were showered with love, I lived worse than a dog. No one asked. Tell me, how did you first get to know Pierre? Well, after I took over the Humane Society, it gradually became harder and harder to maintain its operations. It's said that I could stand to get a large sum of money as long as I helped them to transport some animals abroad. It was only after a few such transports that I finally understood what I was really But then, Pierre wrote to me, saying that we were already partners in crime and that I better keep cooperating with him if I didn't want to be I would order wooden barrels and flotation devices according to his instructions, and then load the sleeping animals onto a boat. Once I sailed to the location he provided, I would dump everything, and a few days after that, I'd come by again in my boat and pick up the animals sleeping in the barrels. Once I had received enough of them, I'd bring them to the harbor to be adopted abroad. That guy, Pierre, he was running the entire show. He set up all the meeting times and found all the foreign adopters. Oh, and he even supplied all of the goods, too.
I just did the transport. He was the one who planned out and executed everything else. Look, I don't know, okay? I've never ever met him in person. We've only ever communicated through letters. And when did he send his final letter? Just last night, he said that the Marechaussee Phantom is now after him, so he's planning to go into hiding for some time. He didn't mention where he's thinking about going, though, but he did tell me to look out for the guards. It's been a few days since Pierre's last appearance. I'd wager that he sent that letter after he found his hiding spot. I burned them. It was on his orders. I had to burn every letter after reading them. I wasn't even allowed to share them with the rest of the society. Sure sounds like you're trying to use the lack of witnesses or evidence to pin the blame on Pierre. No, I swear, this time I'm only telling you the truth. Well, we can check the truth of your statements at the Opera House. I hope you know what'll be coming for you if I were to find any discrepancy between the evidence and the testimony you just gave. I know, I swear I was just telling the truth. My thanks to you both. Had it not been for you, I really don't know what would have... Bonnie helped, too. That's true. It was all thanks to her that Bernard was finally... And it looks like she's grown quite fond of you two as well. Then I'll leave you be. It was that obvious, huh? Well, even though it didn't feel like Bernard was lying, after talking to him, I'm getting an even stronger sense that we investigated so quickly that perhaps we've missed a thing or two along the way. Let me activate deduction mode and consider things again from the top. Is there still anything unresolved or strange that... Well, we've discovered that Bernard is responsible for the trafficking. Yeah, according to Bernard, Pierre also supplied all of the goods. But if the Marechaussee Phantom's records are correct... The Marechaussee Phantom found Bonnie and the Lefebvre pendant. Why would he leave such an obvious trail for us to follow? Bernard claims to have received a letter last night from Pierre. There's no need to rush. Now behave, and follow me to the Ow! That hurt. Ow! Is everything... I still feel like... the relationship between Pierre... Also, I've had this strange sense that something's up. No good. Yeah. I've still got nothing, and I'm nearly out of it. All right, I'll stop thinking about it for now. Let's go to the Humane Society and see if there are any animals before my energy for today completely runs out.
तो वैसे मैं खा के आता हूँ खाना खा के आता हूँ
Back, I'm back. Sorry. यार खाना वाना खा के आए थे। स्ट्रीम ऑन करके खाना वाना, अरे हम जाते हैं, क्या है उसमें, दिक्कत क्या है? लंच करना तो जाना पड़ेगा। हाँ है कुछ। Now behave. Ow, that hurt. अरे एक्चुअली नंबर क्या है वही नहीं पता चल रहा। Each day is a new page in my. Now behave. Ow, that hurt. ठीक है मैं ही लेना। आंटी, अरे तेरी, हाय हेलो कर लो चैट में, हेलो जो आया स्ट्रीम पे। We investigate. Is there still the Mars show say? Why would he leave such an... Bernard claims... There's no need to run. Well... There's no need to run. Perhaps... Now behave. Ow, that hurt. प्यारा है बोलो। मैं वापस से बताऊँ मैं। Now behave. Ow, that hurt. Draw. 15, अरे कौन सा कार्ड सही है? कौन सा कार्ड सही है? Now behave. Ow, that hurt. मेरे का ए सा... एक ही चीज कितना बार करना पड़ेगा, बराबर कार्ड ही नहीं मिल रहा है। Now behave. And Ow, that hurt. Okay, 14. 14 million. Is everything...
क्या एक एक करके हर एक कार्ड देते रहेंगे क्या? Now behave.